ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 15. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 15. பாண்டவர்கள் தேவலோகம் செல்லுதல். சூத உவாச்ச ஏவம் கிருஷ்ண சக கிருஷ்ணோ भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हतः प्रभः विभुं तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत्प्रतिभाषितुं कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठ्यकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गतया गिरा. अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो ह्येष मृतक प्रोच्यते यथा यत्संश्रया द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयं वरमुखे स्मरधुर्मधानां तेजोहृतं खलु मया बिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषादिघता च कृष्णा यत्सन्ति धावहमुकाण्डवमग्न येधाम् इन्द्रं च सामरघणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मकार्थे आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहृता प्रमथनाथमकाय भूपा यन्मोचितास्ततनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवादिमकक्लृप्तमहाभिषेकश्लाघिष्टचारुखबरं कितवैसभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिसाश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्राद् दुर्वाससोरिरचिताधयुधाग्रभुक्यः शाकानशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकी तृप्ताममस्तसलिले विनिमग्नसङ्गः यत्तेजसात भगवान् युधिशूलपाणिः विस्मापितशिगिरिजोत्स्त्रमधान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कळेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्राश्रिता यदनुभाविदमाजमीड तेनाहमद्यमुषितपुरुषेण भूम्ना यद्बान्धव कुरु बलाब्धिमनन्तभारम् एको रथेन ततरेहमतार्य सत्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्य च मूष्वदभ्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रेचरो मम विभो रथयूथपाणाम् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्चत्
यद्दोषु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण नभृतृगर्तशलसैन्दवबाक्लिकाद्यैः अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिताशम् इवासुराणि सौत्ये वृतकुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाह मरयो रथिनो भुविष्ठं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः नर्मान्युधाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशाणि स्मर्तुर्लुढन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटनविगत्तनभोजनादिश् वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युसखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरगम्ये सोऽहं नृपेन्द्ररहित पुरुषोत्तमेन शक्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरभलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वैदनुस्त इषव सरतो हयास्ते सोऽहं व्रती नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराधदमिवोक्तमूष्याम् राजन्स्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदां न सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मितः वारुणी मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतु पञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः जलौकसां जले यद्वन् महान्तो दन्त्यनीयशः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मितः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरितरान् विभुः यदून्यदुभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादः सरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमला मतिः वासुदेवाङ्घ्र्यनुज्ञान परिब्रह्मीतरं हसा भक्त्या निर्मतिताशेष कषाय दिक्षुणोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत् सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरद्य गमद्विभुः विशोको ब्रह्म सम्पत्या संचिन्तद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिनैर्गुण्यात् अलिङ्गद्वादसम्भवः निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निवृतात्मा युधिष्ठिरः प्रताप्य नुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत् यदोक्षजे
निवेशितात्मोपररामसंसृतेः यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीसितुः समं यथा मत्स्यादिरूपाणि दत्ते जह्यात्यथा नटः भूभारक्षपितो येन जहौ तच्चक्कळेवरम् यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सद्गतः तदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेतु कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्महिंसनाद् अधर्मचक्रं गमनाय पर्यतात् स्वराट् पौत्रं विनीनाम् आत्मनः सुसमं गुणैः तोयनीव्यापतिं भूमेर् अभ्यषिञ्चद्गजाह्वये मधुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम् अग्नीनभिपदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कार सञ्चिन्नाशेषबन्धनः वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत् त्रित्वे हुत्वात पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वामात्मन्यजुहुवीत् ब्रह्मण्यात्मानम् अव्यये क्षीरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तः पिशाचवत् अनपेक्षमानो निरगात् अश्रुवन्पधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः सर्वेदम् अनुनिर्जग्मुर्भ्रातरकृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि ते साधु कृतसर्वार्था ज्ञात्वाद्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठचरणाम्बुजम् दध्यानोदरिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणा परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्धुरवापां ते असद्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने विरजे नात्मनैव हि विधुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहम् आत्मवान् कृष्णावेशेन तश्चित्त पितृपि स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तथाज्ञाय पतीनाम् अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवति ह्येकान्तम् अतिरापतम् यश्रद्धयैतद् भगवत्प्रियाणां पाण्डोसुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தத்தில் 15வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.